नजरुल की याद में जातीय साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट नागली रमेश को काजी नजरुल स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कोलकाता 4 अगस्त DKS टाइम्स। संगठन के कार्यक्रम का चौथा चरण जातीय साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट की पहल पर रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर और सांस्कृतिक केंद्र के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कवि काजी नजरुल इस्लाम की 125वीं जयंती मनाने के लिए मुख्य रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें पूर्व राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश श्यामल कुमार सेन और बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर के प्रिंसिपल स्वामी महाप्रज्ञानंद जी महाराज विशेष अतिथि थे। इस अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता लेखक सूर्य हजारिका, वक्ता देवाशीष बोस, सत्यनाथ मुखोपाध्याय, प्रमुख लेखक मनोज कुमार व्यास, मृणाल कांति पंडित, बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद अली खान चौधरी मानिक, प्रमुख कवि और संपादक जहांगीर हबीबुल्लाह, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार मन्ना रेहान आदि को सम्मानित किया गया। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कवि और समाज सेवक नागली रमेश को काजी नजरुल स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में 1 लाख टका की राशि शामिल है। इसके अलावा नजरुल की याद में प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कई कविता पाठ और गीत प्रस्तुत किए गए। पूरे कार्यक्रम का निर्देशन संगठन के संस्थापक सचिव शक्तिमें दास ने किया। তুমি দুনিয়ার ঝংকার উন্নতশীল তরুণ প্রাণীর কেউ আর নামা তুমি On behalf of the India organizing team, I extend a warm and heartfelt welcome to all present here. Your presence adds grace and gratitude to this auspicious occasion. Program. In this August gathering, on the dais and in the audience, in the month of August 2025, we are extremely pleased to present with you a very eminent person who is adept in connecting people. Connecting people is a simple word, but how he implements it is a thing to be seen if not followed. With this motto, he has connected elaborately with people in almost all the states of India and around 100 countries of the world. And more so, people at all levels of social strata and political stature. He is Sri Nagatihalli Ramesh from Karnataka. He is beyond a poet. He is a philosophical thinker who connects closely with nature. He is more than a lyricist. His love for music has made him an ardent beneficiary of the street musicians to professionals. He is an artist, but more, he is an agriculturist, a farmer's son of the soil. He is not just a playwright. He lives in practice what he preaches. He is said to be a filmmaker, but his real life goes larger than his real life. He lives beyond his sense of journalism only to encourage young journalists to their heels. He is also a politician only to criticize the wrongdoings and appreciate the good deeds of his fellow politicians in the same breath. He is a social activist, but his services go beyond giving just doles, but making people stand on their own feet. Here is Sri Nagatihalli Ramesh. We feel honored to honor a truly universal soul and a deep-hearted person in Sri Ramesh. Ladies and gentlemen, may I request you to put your hands together as we felicitate Sri Ramesh with Kazi Nazrul Memorial International Prashasti 2025. grain of salt. Cool
ಕೂಡೋಣ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಾಳೋಣ ಬೆಳಗೋಣ संग मिलेंगे संग रचेंगे संग जिएंगे संग खिलेंगे let's come together let's create together let's live together let's shine together in this function bhakti purvak pranam to Swami Mahaganamurti ji and Padma Shri Dr. Surya Hazarika ji. Actually, I am very much connected with Bharat Ratna Bhupena Hazarika because of musical my passion. Anyway, his cousin, I got it. Sri Deshvashi Basu, Sri Indrinan Kant Pandit ji, Beer Murtuja Mannare ji, Bangladesh में आया था, असम में आया था, उड़ीसा में आया था. Never give justice to my farmers. I don't know why. At least basic minimum, basic price they never fixed it. भारत का आत्मबल है, बैकबोन है, किसान है. उसका जिंदगी बर्बाद होते हैं, मटाज होते हैं, भारत प्रकाश कैसे होते हैं? कब किसान का जिंदगी अच्छी होते वो दिन प्रकाश बनते भारत. इसलिए तो आई एम गोइंग टू डेडिकेट माय दिस अवार्ड टू फर्स्ट किसान परिवार ने एंड देन द पौर कार्मिका सफाई कर्मका दे आर गोइंग टू क्लीन आउट डर्टी दे आर स्वच्छता भगवान से दे आर अनटचेबल एंड फॉर द डिप्रेस्ड सप्रेस्ड पीपल आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस एंड थर्ड वन द पीपल हु आर हम्बलिंग फॉर love, care, concern, affection. For that moment, we have to, what I am saying, if I say thankful, it is little. What can I say? There will be interconnected. You ask anybody from past 6 months, I am totally interconnected with West Bengal. I am very much inspired. But today, what I am saying, now, Kaveri Mata, Ganga Mata, एक ही है. We have seen, when I came here 25 years ago, the blue is Ganga. Now we turned it to garbage Ganga. It's not the way. We have to respect Ganga Mata. We have to respect Kaveri Mata. We are interconnected. We are sister concerned, mother concerned. So all the things what I am saying, we are, what I am saying this time, especially for all university or academy, they are nothing, waste for me. Every day they are brain shining. No, like Ramakrishna Paramahansa ji, Vivekananda ji, Mahasadavananda ji, Arvind Joshi, like this in this place. कब हृदय प्रकाशमान होते हैं, पूरा जीव संकुल अच्छे होते हैं. बुद्धि प्रकाशमान ज्यादा होते, जिंदगी खलास होते हैं. We are too much clever is very danger to the society. We have to shine our heart. So हृदय प्रकाशमान के मैं सबको पूछता हूँ. मेरे लिए रमण महर्षि जी हैं, अरविंद घोष जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, विवेकानंद जी हैं, शारदा माता जी हैं. वो पुण्यात्मा परम ज्योति जीव ज्योति इसके लिए ये उसका जन्म भूमि है ना, वो इसका बर्थ प्लेस है ना, ये प्रशस्ति मेरे को मिल गया, मेरे धन्य है. वो जीव ज्योति है, विश्वात्मा है, सबको है. काजी निष्ठाम ने इसने मेरे को दिया ना, मैं सबको प्रणाम करता हूँ. I'm going to speak even my Kannada language and Hindi and English. First of all, I'm very much happy and connected. Divya Jyoti, मूर्ति है ना, रामकृष्ण शारदा जी ने, विवेकानंद जी, philosophically and spiritually in my heart. Especially in the birthplace of ancestral property. I'm going to receive this award now. Jeevan Dhanyavad. See, Sarpendra Uncle Upakam. Don't say it's a plant, say put a grain of salt. कूड़ोना कट्टोना बाड़ोना बेळगोना संग मिलेंगे संग रचेंगे संग जिएंगे संग खिलेंगे. Let's come together, let's create together, let's live together, let's shine together.
in this function, मेरा भक्तिपूर्वक प्रणाम करो स्वामी महागणानंद जी and Padma Shri Dr. Surya Hazarika ji. Actually, I am very much connected with Bharat Ratna Bhupena Hasarika because of musical, my passion. His cousin, I got it. Sri Deshkoshi Basu, Sri Mrinal Kant Pandit ji, Beer Murtuja Mannaran ji. बांग्लादेश में आया था, असम में आया था, उड़ीसा में आया था. मैं सबको रेस्पेक्ट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द मैन ऑफ स्पिरिट, इज रोल मॉडल. आई एम गोइंग टू टेल एवरीबडी, शक्ति मोहि दास is a role model to us. First of all, I am respectful because of ethics and principles. I loved it, I respect it. In the age of 81 years, working like 18 years. So, in the same aspect, I am very thankful and grateful to he is my second mother, Siddhartha Mukhopadhyay. And a lot of my friends are there, sisters and brothers. पानी में मछली रो रहे थे, कौन देख दिया? पानी में मछली रो रहे थे, कौन देख दिया? नदी देख दिया, कड़ल देख दिया, परमहंस देख दिया, शारदा देवी देख दिया, विवेकानंदा देख दिया, अरविंद घोष देख दिया, रमण महर्षि देख दिया. ये स्पिरिचुअली क्या है वो मालूम होते. इसलिए तो we are seeing the tears of underwater fish. We have to be like that in this path. We have to search it. No, we'll get it. The flying birds never built their nest at the sky. The flying birds never built nest at the sky. See, West Bengal is very much inspiration for us, both philosophically, spiritually, and freedom movement. त्याग से, बलिदान से हमको स्वातंत्र मिल गया, but we never understand the meaning of freedom, swatantra, because their sweet choice. Something will happen, whatever, we have to respect old generation people, then only, because what I am saying, actually I am going to, today I am get, when I am studying third standard, I am stumbled. Bikla, it's not, I never talk to easily and all. Once when playing in the playground, one person, my tongue is, you can check it, it's almost my mother suddenly she carried to the veterinary doctor and stitched it. This guy after that he participated 150 debate competition, he got all 150 first place. So Delhi Doordarshan, they made me one documentary in 1987. And after that, sometimes I fed up with this system and all, I tried 2 times suicide. Once I lay down in the railway track, but in India, there will be no punctuality of a train, because not 3 hours delayed. I went to watch another one movie, Rajkumar, and why have to die? So, if anyone critique railway department, I am very angry with them. Because of delay, I survived. Thank you. What I am asking, everything is now, we have to respect everyone, this freedom movement, Subhash Chandra Bose ji, Rabindranath Tagore ji, like Bankim Chatterjee ji, in Kannada mein Kuvempu ji, Dara Bendre ji, or Shoram Karant, like that, so many things we have. We have to do a lot of things. We have to, first of all, Qazi Nasrullah Islam, actually, I written on poetry. If the president give permission, first I am going to read it in my Matrubhasha. Because everything is, he combined Matrubhasha only. And then one of my friend is great musician and associate editor of Deccanal, he translated into English. ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಅಮರ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯ ಝರೆ,
ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚೆಲ್ಲಿ ಒಳೆವ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯನು ಬರುವ ಹಾದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಯಾದಂತೆ, ಅತ್ತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇಳು ಹೊರಟ ಸೂರ್ಯ, ಆಡಿದ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾದಿಯ ನುಡಿಗಳು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುರಾನ್ನ ಹೃದಯ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು ಕಾಜಿ ನಸ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಮೇಲೆದ್ದರು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬೀಸುತ್ತ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ. ಕವಿತೆ, ನಾಟಕ, ಕಲೆ